हाय हेलो आशा करी समस्त भले थिबो। दिस इज लेक्चर नंबर 10 ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड एथरे हम डिस्कस करिवा ऑन अ टॉपिक कॉल्ड टॉर्क ऑन अ current carrying loop in a uniform magnetic field. So what I are going to do is to place, okay, हम गोटे कौन करिया गोटे कॉइल को रेक्टेंगुलर कॉइल को गोटे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भितर रखिबा and due to that uniform magnetic field it will produce a torque on that current carrying loop, okay, and due to that torque कौन हम से जो लूप टा जो रेक्टेंगुलर लूप टा थियो सेटा से मैग्नेटिक फील्ड भितर घुरिबा को स्टार्ट करिवो एंड ता विषय पढिबा केमते घुरिबो केते घुरिबो टॉर्क केते पडिबो एंड दिस इज नथिंग बट द कांसेप्ट बिहाइंड द फैन्स। ओके, फैन रे हम कोन करछे किछि करंट दउ जे एंड करंट दबा द्वारा फैन टी घुरुची एंड दिस इज द एक्जेक्टली व्हाट इज हैपनिंग विथ दिस थिंग बट a revised version used in the fan. They are modeling fans such that they will work with AC and with a defined frequency like 50 hertz and all. So the fundamental basis or fundamental concept behind the fan is this thing. Okay, so let's start. So what we have two magnet setup. We have two magnet setup here. So one is north pole this side, one is north pole this side. Okay, so this is north pole and one is south pole this side. We have two permanent magnets. These are two permanent magnets. Okay, one is north pole and one is south pole and we are heading them towards each other. That means we know that the magnetic field lines will be from north pole to south pole. That means our magnetic field रहबो सेटा केवल एठू north through south रहबो. Okay, because this is also outside the magnet, that's why the field will from north pole to south pole. If it was inside the magnet then it will be south pole to north pole. Okay, anyway, so this is the magnetic field lines as you can draw, as you can see. Okay, so these are the magnetic field. Okay, and let's say we are placing a coil. Okay, placing a coil, current carrying coil you can say. Okay, so I am placing a coil like this, you can see. So this is a current carrying loop. Okay, current carrying loop, let's say name it. This is A, this is B, this is C and this is D, and let's say take this take this loop length to be L, okay, and width to be A, width to be let's say D, let's say D. Okay, okay, and now let's suppose there is a current in an anti-clockwise sense. In an anti-clockwise sense means this current will be flow like this. Okay, so the current is flowing in an anti-clockwise sense in the current carrying loop. You don't have to question that how can the how or केमिति से current आसिला. That's let's say किछि भी करी के हमें current पठे जे, let's say हमें battery connect करते, let's say उडे AC source देइछे, somehow we are managed to have a current in the loop. Okay, and in this case we are assuming that we have only one turn. That means हमारा loop टा थरे ही घुरिछि. Okay, we are assuming that number of turns here is 1. Okay, the number of turns in the current carrying loop ताको हम कहंदी n, बड़ n, is taken to be 1 for now. So एबे पय हम तो कोन नै जे n को 1 नै जे बा number of turns को 1 नै जे. Okay, then current घुरची in anti-clockwise sense, so we can define as this is enclosing this loop. एटा ଗୋଟେ rectangular loop टे, से rectangular loop माने से किछि एरिया को enclose करूची within that. तो हम देख परिबा किछि एरिया ते कोन करची ता भितर से enclose करची. This is the area, it is enclosing within it. Okay, and जदि कहबा एरिया तो ଗୋଟେ हमें ए केस रे एरिया को वेक्टर हिसाब रे नबा, एरिया रो मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करि परिबा. एरिया हबो केते जेतु लेंथ अछि L and width अछि D. So L into D will be the area of the loop or area enclosed by the loop. But what is the direction and
मे बी मु दी आई थिंक 2 नंबर लेक्चर ऑलरेडी कहितली जदी करंट कैरिंग केस अछि हम आगरे देन हमें एरिया फाइंड करिया पे राइट हैंड थंब रूल यूज करिवा जो पटे करंट घुरुची सेही पटे हातर आंगुली को कॉल करिवा बा डाहाण हातर आंगुली को कॉल करिवा जो पटे थंब रहइबो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर सो ए केस रे जदी देखिबा हमें ए केस रे देखिबा करंट कैरिंग लूप रे करंट एंती एंटी क्लॉकवाइज सेंस रे फ्लो होची करंट एंती एंटी क्लॉकवाइज सेंस रे फ्लो होची that means the area vector will be out of this blackboard or out of this computer, okay, and it will be facing towards us, okay. So the area vector will be something like this, you can see. So this is the area vector, and we can name it A vector. And you can see there is also bar magnet अछि ना, so सब जगह रे magnetic field थिबो से ए पॉइंट रे किछि magnetic field एंती जाईची, and you can now see there is a angle between the area vector and B, okay, area vector and B, let's say that angle is theta, or you can take any angle, but to remember that there is a angle between A vector and B vector, and that will change as this rectangular loop will continue to rotate. जते रोटेट करियो स्ट्रेट करियो सेते A vector and B vector भीतर जो एंगल टा अछि that angle will going to change. Anyway, as we know that if we have a current carrying wire, okay, and let's say किसी current भीतर flow होछि, let's say current is flowing like this, and let's say हमें कहू जे कि आ ऊपर वर्तमान किसी magnetic field अछि यार तार ऊपर कि ना, so let's say the magnetic field is going inside this screen or inside this blackboard, okay. So I can tell as this current carrying wire is under the effect of a magnetic field, so force will come into play, ये तारा ऊपर एक force पड़ियो, and that force is equal to I L vector cross B vector, okay. I is current, L is obviously the length of the current carrying wire, and B is obviously the magnetic field at that point, and L vector direction will be along the current, माने L vector माने L टा तो गोटे लेंथ रे ता वेक्टर जदी हमें नबा तार लेंथ रो वेक्टर को जो नबा ताको हमें एम्ति नबा जेंति कि सेटा करंट रे डायरेक्शन रहबो, जदी करंट ऊपर को अछि त लेंथ वेक्टर भी डायरेक्शन ऊपर को रहबो, जदी करंट तळु को अछि देन करंट लेंथ वेक्टर रो डायरेक्शन भी तळु को रहबो. Anyway, so this is the force on a current carrying loop, okay, in a uniform or in a magnetic field, okay, in a magnetic field. So F will be I L cross B, and we have to use this in this torque calculation, okay. So let's first do one thing, okay, let's say copy paste, okay, कोटिके move कर दा तळुको, as this picture is very important in this lecture, okay. So this is B. Anyway, so now you can see there is current from D to A in this section and B to C in this section, right? And also the current is flowing from the C to D in this section, the upper section, and A to D in the lower section of this current carrying loop, okay. ताମାନେ जदि हमें लूप को चारिटा सेगमेंट रे विभक्त करि परिबा, गोटे ऊपर सेक्शन, गोटे तळ सेक्शन, गोटे डाहाण एंड गोटे बा सेक्शन, ओके, चारटा भाग रे विभक्त करि परिबा, एंड सबु भाग रे बा सबु पार्ट रे किछि करंट फ्लो होछि, एंड लेट्स से दैट करंट इज I, okay, the current flowing is I, okay. So current we have is I, and as the loop is in the magnetic field, तो यहाँ पर कौन होगा बर्तमान फोर्स पड़ो, सो एवरी पार्ट ऑफ द लूप ऊपर कौन होगा फोर्स पड़ो. सो हमें चारटा जेतु पार्ट ने जे विभक्त करछे, चारटा सिमेट्री वाइज विभक्त कर दी, चारटा पार्ट रे देखिया को डायरेक्शन को कुआडे फोर्स पडुची, ओके. सो वी कैन नो द फोर्स, we can know the direction of the force just by using the right hand thumb rule, because L cross B, wherever the cross product will come, we can use our right hand thumb rule, okay. So now you can think that here in this DA section, okay, in the DA section you can see the current is going downward direction, and the B is in the rightward direction. So the L is like this,
Okay, L is like this and B is like this, you can see. So L तळुको अछि and B इयाडे अछि. Okay, L तळुको अछि and B इयाडे अछि, देख परछो. L इयाडे, L तळुको and B इयाडे. So L cross B कले थंब कोड रहउछि, थंब मो आडे रहउछि, माने स्क्रीन रो बाहर को and मो आडे रहउछि. एंड जदि एटा टिके टिल्ट हिक अछि, हमर जो लूप टा टिके टिल्ट हिक ने बुल्ली के अछि, तब जदि L cross B करिबा, L cross B कले जो मुहटा बा ए जो वेक्टर बा थंब टा टिके टिल्ट हिक मो आडे आसीबो. ओके, टिके टिल्ट हिक आसीबो. दैट मीन्स आमर जो एरिया वेक्टर, सॉरी आमर जो फोर्स वेक्टर टा रहइबो डीए सेक्शन ऊपर, दैट विल बी लाइक दिस. You can see this is the force, this is the force F, this is the force F. Let's say टिके बड़ कर दो अक्षर को, टिके क्लियरली देखि हबो. ओके, so this is the force F. Okay, now similarly कोन हबो सेपट सेक्शन में, माने BC सेक्शन में देखो करंट जाउ ऊपर को एंड मैग्नेटिक फील्ड अछि स्टिल इन दिस डायरेक्शन, माने मैग्नेटिक फील्ड अछि एबे भी डाण को एंड करंट जाउ ऊपर को. सो करंट जाउ ऊपर को एंड मैग्नेटिक फील्ड अछि डाहाण को. ओके, सो द फोर्स वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन टिल्टेड एंड स्क्रीन रो भीतर को रहबो. देखो थंब रहउछि तम आडे, राइट, कैमरा मो आगे अछि, कैमरा जे तुम आगे अछि, सो थंब रहउछि तम आडे, तने थंब टा रहउछि ब्लैक बोर्ड रो भीतर को, राइट, स्क्रीन रो भीतर को. दैट मीन्स द फोर्स will be in this direction, so this is the force. Okay, and जदि हमें अपर पार्ट को देखिबा, CD पार्ट को देखिबा, तो CD पार्ट रे केमति अछि, CD पार्ट रे हमरो करंट वेक्टर याड अछि बा लेंथ वेक्टर याड, जो करंट रे सेट लेंथ रहबो. सो लेंथ वेक्टर याड अछि. ओके, याड अछि एंड B वेक्टर याड अछि. ओके, सो मोड बर्तन देखो L वेक्टर याड एंड B वेक्टर याड. ओके, याड ता माने मु मोडीबी कोडे याड को मोडीबी, सो याड को मोडली. सो F वेक्टर कोडे रहबो ऊपर को रहबो, F वेक्टर डायरेक्टली ऊपर को रहबो टू द टॉप. Okay, so now you can see the F vector will be from this side to this side. This is another force. Okay, this is another force, this is F top. Okay, and similarly you can also find that downside bas AB part also the force will be just opposite to the F top and this is F down. Okay, जदि हम टिके अलगा करी कि बा पूरा लूप रो सेक्शन रो टिके अलगा करी देखिबा, सो फोर्स विल बी somewhat like this. सो मु लूप टा ड्रा कर दोजी, सो इट विल बी मेक क्लियर कि व्हाट कोन होउजी एठी. सो को डायरेक्शन में फोर्स पड़ी जी. ओके, सो प्रथमे करंट को डायरेक्टेड कर दबा. सो करंट एमती अछि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे. ओके, ओके, प्रथम फोर्स तो पड़ी जी एपर डायरेक्शन, सो ए फोर्स उडे एमती पड़ी जी, ये हला FB. Okay, not AB, only the F दे दियो. And this is another vector going in opposite direction that side, से भितर को अछि, सेटा भी F and गोटे force अछि F top, this is F top and one force is F down. F down. Okay, just one thing to remember that this F top and F down is along one line. You can see this F top and F down force are along one line, whereas the force on the AD side and BC side, they are not in the same line of actions. Okay, but you can see that all the forces, okay, all the forces or the net forces on this current carrying loop is anyway is going to 0, because I mean the AD side of force and CD side of force. So this force and this force and this force is going to cancel out each other, because they are same in magnitude and opposite in direction. Magnitude same है बेथि पे कारण current same अछि. ओके, तारे current same अछि, एठी current जतिक अछि, एपट सेति current अछि, current same अछि and L बा length of the wire is also same, and also the direction between L and B will be also found to be same. Okay, so F and this F and this F are same in magnitude and opposite direction, they will cancel out each other, and this F top and F down in the similar fashions also same, and they will also cancel out each other. That means the net force on the current carrying loop is 0. Okay, so the net force on the current carrying loop is 0
okay, but still it can be capable to produce a torque, and that torque will rotate this current carrying loop inside the magnetic field. So let's see how, without having any net force, we are still capable to produce a rotational effect on this current carrying loop. Okay, this is not a current carrying loop anyway, but we can imagine a current carrying loop going around this area, and this area is actually bounded by that loop. Okay, so now you can see, you can match with the match with the picture that in this side, or this is AD side, this side the force is towards me, so the force is in this direction. Okay, and in the BC side the force is in this direction. Okay, so these two forces are not in same line, they are not in the same line of action, they will cancel out each other, but they can produce a rotational or a moment of force. You can see, as this force is this side and this force is this direction, so it can rotate. Okay, it can rotate this loop. Okay, so without having a net force, it is still capable to have a torque. Okay, so before that, find torque. And how can we calculate the torque? Okay, so the torque vector is equal to R cross F vector. R cross F vector. जदि आम कहूँ धर मु कहि धर गोटे बाड़ी अच्छी, लेट्स से सिंपल गोटे बाड़ी अच्छी. ओके, सो लेट्स से दिस इज माय वन लेंथ. ओके, गोटे बाड़ी अच्छी एंड ताको मैं एठू फिक्स कर देछि. दिस इज माय फिक्स्ड पॉइंट. या चारिपटे से घुरिबो. ओके, सो इट विल रोटेट this length will rotate around this point. So this point is called pivot point. And let's say हमें कहूँ कि एई पॉइंट रे, this point रे हमरो force लगी छी, and force let's say direction लगी छी. Let's suppose in this direction the force is applied. As you can see, the force is applied in this direction, so it will help us to rotate this body. Okay, so ये body टा को घुरेबारे साहाय्य करिवो कि force टी. Okay, and आमे कहि परबे ए जो pivot point लाइटा, let's say आमे ताकू ये ना दे दबा origin O, and origin O पाखरु जो point रे force लगी छी. Okay, सेई जो distance टा सेटा को आमे कहंदी R vector, and the direction of that vector will be from origin to the point where the force is applied. Where is the force applied? So if it is applied force, so जोठी force apply हेजी सेही पर्यंत कोठू pivot point to सेही जाय जो vector टा रहइबो, सेटा हमर कोन रहइबो R vector रहइबो. This is the R vector. Okay, and ए केस रे हम देख पारछे R और F भीतर जो एंगल टा छै सेटा ए केस रे बाय चांस 90 डिग्री हे छै, बट 90 डिग्री हबो बोली किछ माने नै, किछ भी हो पारे. ओके, सो जदी किछ एंगल अछि तो ताले R क्रॉस F करियो. सो एठी देखो R क्रॉस F कले R अछि याडे, अगेन राइट हैंड थंब रूल, बिकॉज़ क्रॉस प्रोडक्ट R ए डायरेक्शन में F ऊपर को. सो टॉर्क रहबो मो आडे, टॉर्क रहबो कोडे मो आडे माने स्क्रीन रो बाहर को माने मु ताको नोट करि परिबी एठू बाहर कर मो आडे माने स्क्रीन रो बाहर को माने एटा डॉट साइन उटे रहबो. सो दिस इज द टॉर्क. ओके, सो टॉर्क मोहर माने मो आडे अछि, बाहर को अछि, एंड एटा को हम कहउते पॉजिटिव टॉर्क. एटा कोन कहबा पॉजिटिव टॉर्क. एट इज पॉजिटिव टॉर्क कोन पई, कारण ये जो घुरीबाटा होची, ए घुरीबाटा एंटी क्लॉकवाइज सेंस रे होची. तुम देखिबो ये जो घुरीबाटा होची, घुरीबाटा एक्चुअली को सेंस रे हबो, एंटी क्लॉकवाइज सेंस रे घुरीबाटा हबो. सो एंटी क्लॉकवाइज पई क्लॉकवाइज सेंस रे घुरीबा पई हमें कोन कहबा पॉजिटिव टॉर्क. मन रखा, एंटी क्लॉकवाइज पई पॉजिटिव टॉर्क, एंड जदी काली की क्लॉकवाइज कोन जिंस घुरला ताले तार रेस्पेक्ट जो टॉर्क थिबो that will be a negative torque. Okay, so we know that how can we calculate now the torque for a given situation. Okay, and I also defined what is the formula to derive it, or sorry, to calculate it. And yes, in the formula the F is the applied force, obviously. So let's zoom out this picture so to have a better visualization. Okay, so I have already drawn it. Okay, so this is the loop ABCD. Okay, and the force is as followed from the last figure. Okay, so now you have to calculate the torque. Okay, now I have to first discuss or first declare what is the rotational axis, or around which point
the entire system is rotating. Okay, so as you can see, the rotational axis is this thing. Okay, so around this axis the whole thing is rotating, okay, around this axis the whole thing is rotating. So this is the rotational axis, anyway. So now if we can see, this is the force applied here, and I already discussed कि हमें जो तला जो ये जो लेंथ रा नहीं ए लेंथ रा हमें d नहीं थिले. ओके मन थिबो प्रथम नीचे ए लेंथ रा हमें कितने नीचे d नीचे. So this length is d. Okay, this length is d, and as this length is d and this is the rotational axis is just between these 2 points, so this is d by 2. Okay, so this is d by 2, this side is d by 2, and also this side is also d by 2 lengthwise. Now as you can see, the force 8 lagichi and the force रो दी draw करिवा, this is pivot point somewhere 8 आसीबो. जदि pivot point 8 आसे, so r vector will be from this side to this side. You can see, so r vector is in this direction. Okay, so direction देखिया पे हम टिके extended कर दो. So r vector is in this direction. Okay, and r vector length केते होबा जति कि d by 2 एटा d by 2 so एटा भी d by 2 होबा. So r vector length होबा d by 2 and तार vector direction एपटे होबा, and this is the f, and r और f भितरे this is the angle. Okay, as you can see, this is the angle between r vector and f vector. Okay, and is obviously not 90 degree here. Okay, so and तुम देख परिबो जते जते ये जिंस घुरीबा को स्टार्ट करिवो, जरा मु कहबी एठी अछि, so force a direction रे वर्तन. Okay, force a direction रे. Okay, and r a direction रे. Okay, so एठी अलग हाइते पारे जते force एठी लूप थिबो, so force एम्ति पडिथिबो सेपटे भितरु को. Okay, and एपटे force एम्ति याडे. So बर्तन जो r और f भितर एंगल अलग थिबो, so जते जते घुरीबा स्टार्ट करिबा जते जते आगु को घुरीबो, so f और r भितर, so force r vector भितर एंगल कोन होबो बारंबार चेंज होबो. Okay, so this theta is actually varying, okay, with respect to time. जते जते घुरीबा स्टार्ट होबो से जते घुरीबो. Okay, let's say this, take this angle as alpha. Okay, now same thing will be in this direction also. So हम कहि परिबा एठु वर्तन एटा अगेन एपट पई एपट वायर पई एटा भी अगेन pivot point. So एटा रो pivot point एटा ड्रा करले एटा जदि एक्सटेंड करियो, so this is the r vector direction, and एपट भी r vector value केते होबो सही सेम d by 2, and the angle between them is now this angle. As you can see, these two lines or two angles are actually same. Okay, so now torque हम calculate करिवा for the fast force. Okay, let's say this is f1 and this is f2 force. Okay, first and second force. So torque 1 केते आसीबो, torque 1 आसीबो r vector cross f1 vector. So if we are interested in only the magnitude case, so tau 1 will be r f1 sin alpha, because the angle between them is alpha. So r f1 sin alpha, and tau 1 is equal to r is obviously d by 2, so d by 2 f1 sin alpha. So tau 1 will be f1 d by d sin, sorry, f1 d by 2 sin alpha. Okay, so this is the tau 1, and similarly tau 2 केता हो, tau 2 will be r vector cross f2 vector, and similarly we can calculate tau 2 will be f2 d by 2 sin alpha. Okay, and जेहेतु तुम देख पारछो दी जनकर जदि सेपट पई कैलकुलेट करबा ताले माने f1 पई जदि कैलकुलेट करबा ताले डायरेक्शन ऊपर को आसीबो, माने क्लॉकवाइज घुरुची. ओके, सो बॉडी इज क्लॉकवाइज सेंस रे घुरुची, जदि क्लॉक सॉरी आई एम वेरी सॉरी, जदि बॉडी एंटी क्लॉकवाइज सेंस रे घुरुची ताले टॉर्क आसीबो पॉजिटिव. एंड तुम देख पारथुओ जदि मु r क्रॉस f करिवि f1 पे, सो r एपटे अछि देख पारछ, r याड अछि f1 पे, r याड अछि एंड f1 याड अछि माने बाहर को. सो r क्रॉस f कले टॉर्क रहउची ऊपर को. ओके, एंड सेम केस जदि मु सेपट माने f2 पई करिवि, f2 पई r सियाडे और f याडे देख पारछ, r सियाडे और f याडे, सो अगेन टॉर्क ऊपर को. ता माने दीटा केस रे, ये दीटा केस रे हम पाइवट पॉइंट पाखरे कहि परिबो. सो पाइवट पॉइंट पाखरे टॉर्क 1 भी ऊपर को रहइबो, एंड आल्सो टॉर्क 2 भी ऊपर को ही रहइबो, टॉर्क 2 भी ऊपर को रहइबो. दे both the torque are in the same direction.
Okay, so they will help to rotate this whole system in a anti-clockwise direction. As you can see, force gote iade podle gote force semti bhitru ku padi ja gote force semti baharu padi, it will rotate in a anti-clockwise sense, in a anti-clockwise sense. That means this torque, or both torques are positive torques, this both torques are positive torques. Okay, and as you can see from the dimension, sorry, from the magnitude also, they are same in magnitude. Okay, because f1 is equal to f2, as f1 is equal to f2, I am already discuss करछे जे force दिटा same हेबे, as f1 is f2 is equal to f2, that's why tau 1 is also equal to tau 2. So tau net kete हिजो, जेहेतु they are same direction আছে, direct means tau 1 plus tau 2, that means f1d by 2 sin alpha plus f1d by 2 sin alpha, and that will equal to tau net kete हिजो, just 2 to कटि जिवो दिटांगो, so it will just f1d sin alpha, f1d sin alpha. Now you have to just put the f1 value, or f1 जेहेतु f1 value जहाँ f2 value से है, so better आपको नहीं जिबा f1 equal to f2 is equal to let's say f is equal to let's say f. जदि एमती नहीं गले तले एठी हम पकई परिबा f1, एठी f1 जगह हम पकई परिबा, केते पकई परिबा बा f पकई परिबा, राइट, एठी हम f रख परिबा, so f d sin alpha just as your sin alpha, कारण half plus half is equal to 1, so this thing will be the torque or net torque. Now just put your f value here and you will get the answer of net torque. Okay, so for that, this is the formula as we already discussed. F vector will be IL cross B. So F ର magnitude केते हिजिबो ILB sin theta, where theta is the angle between the L and B, and in this case the angle between the length and the B vector is always going to 90 degree, as you can I can show it from this demo. So ଆମର magnetic vector सदाबेले को direction अछि, सदाबेले ए direction अछि, you can see from the figure, ऊपर figure टाको देखो, ऊपर figure हम देखो जे magnetic field सदाबेले ए direction अछि, सदाबेले. ओके, ये केबे चेंज होवन कारण यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अनचेंज और टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सो इट विल नॉट चेंज, इट विल बी फॉरएवर लाइक दिस. ओके, सो केवल घुरुची कि ये घुरुची, सो प्रथम एमती थिबो, तापर एमती हिजो, तापर एमती हिजो, से घुरिबो बारंबार. सो जते भी घुरु, ओके, सो बर्तन देखो ए केस रे, जदि ए केस रे देख बर्तन ए भले अवस्था रे अछि, लूप ए भले अवस्था रे अछि, सो बी याडे एल याडे धर, सो एल ऊपर को जाउचे एपटे, माने एटा बीसी साइड, एटा को साइड बीसी साइड, as you can see as BC side रे magnetic field याडे एंड ये करंट याडे, सो एल बी याडे, सो बी और एल भीतर देख परछे एंगल 90. काली जदी एमती बुल्ली गला, काली जदी एमती बुल्ली गला, लेट्स से एमती बुल्ली गला, एबे भी देखो बी याडे आ एल याडे एंड एबे भी आंको भीतर एंगल केते 90 डिग्री. काली के पूरा एमती बुल्ली की सीधा भी हे गला, देन भी देखो बी याडे एंड एबे भी एल याडे, सो एबे भी 90 डिग्री. दैट मीन्स एल और बी भीतर सदाळे एंगल तमर केते रहइबो 90 डिग्री ही रहइबो. ओके, सो आमे कहि परिबा आई एल बी sin थीटा जगह रे, सो आमे लिख परिबा f इज इक्वल टू आई एल बी sin 90 एंड sin 90 as 1, सो आमे लिख परिबा सिंपली f इज इक्वल टू आई एल बी एंड जस्ट पुट दिस वैल्यू इनटू द tau net इक्वेशन. सो tau net इक्वेशन लगेले केते आसीबो tau net, so tau net will be ILB d sin alpha. Okay, so that is tau net is equal to, हमें B और D सॉरी L और D को इकट्ठी कर दो, so IB LD sin alpha, and I can see L is the length of the loop, ये जो loop टी अछि loop रो length हला L, okay, and D हला तार width, so L into D actually कौन दबा, ये जो एरिया टक दबा, जानि परछो, so हमें देख परछो ना, so this is our length vector, this is our length vector, this is length, okay, and L into D कले हमको complete area टा मिलिबो, this area complete area टा पूरा मिलिबो, so this is the area, okay, this is the area,
एंड आम अलरेडी जानी एरिया वेक्टरटा कौन एरिया वेक्टरटा बाहर को रमती आम करेन्ट डायरेक्शन जब हाथ को एमती बुलेबा सो मैग्नेटिक सॉरी एरिया वेक्टर डायरेक्शन कौन बाहर को रही यही सेंटर रू एरिया वेक्टर डायरेक्शन कौन रहा दिस इज द एरिया वेक्टर एंड यार वैल्यू के एल इंटू डी सो आम लिखिपर टाउ नेट विल बी आई बी एल डी इज इक्वल टू ए साइन अल्फा नाउ जदि आम को वेक्टर एटा दिस इज एक्चुअली फॉर्मूला जदि आम न्यूमेरिकल वे कौन सी वैल्यू कैलकुलेट कर नेट टॉर्क रो कैन यूज दिस फॉर्मूला ओके एंड यस जदि तुम पाखे आम ऑलरेडी माने प्रथम मान नहीं कि टोटाल लूप रे केतरा टर्न अच्छी गोटे टर्न अच्छी जदि एन टर्न्स थी प्रति टर्न में करंट आई फ्लो हो एन टर्न पे करंट एन आई हो राइट जापर धर मुझे कह गोटे टर्न अच्छी दिस इज वन टर्न राइट ओनली वन टर्न सो गोटे टर्न में केते करंट फ्लो हो आई फ्लो होती मुझे आउ गोटे टर्न जोड़ी देवी सो टर्क विल बी 2i देन आउ गोटे 3i देन आउ गोटे 4i देन जब एन नंबर ऑफ टर्न्स थी तो करंट विल बी ni सो in case of if the number of turns is n then कौन हम देन आम टाउ नेट हो जस्ट आई जगह आम लगे पारे n टाइम्स i b a sin alpha ओके सो इट इज योर नेट टॉर्क फॉर a general case having a rectangular loop or having a rectangular loop of n turns okay now it टिके आउ टिके जिनस मॉडिफिकेशन करें दिस इज जस्ट द मैग्नीट्यूड जदि आम आपको वेक्टर फॉर्म लिख पार सो आपको आउ गोटे वे भी लिख हम टाउ नेट इज इक्वल टू एन आई को पाखक नहीं आसवा एंड ए को भी पाखक नहीं आसवा आई ए बी साइन अल्फा एंड फ्रॉम द सेकेंड लेक्चर वी नो दैट एन आई ए this thing will be m vector or magnetic moment or magnetic dipole moment vector so I will get tau net is equal to m b sin alpha and you can also use this formula in numerical if you know the magnetic moment of the current carrying loop and the magnetic field going through that loop anyway now the vector form will be tau net will be m vector cross b vector and obviously आपको यदि खोलिबा हमें so m b sin alpha आसबा and this alpha should be the angle between m and b okay and this point is not very clear from the picture because the figure is in the 2d surface this is the b field okay this is the direction of the b field and what is the angle of this alpha this is actually the same angle here also okay this point is not very exact from this figure but you can imagine this thing or use this type of shape to know that actually what I am saying is correct okay so tau net will be m cross b in a vector form okay so I think I am jeti vital formula पाइबार थिला पाई गले okay and this is the end of this lecture भाबु समस्त बुझथिबो जे भी जो पॉइंट बुझिना छोटिया लेक्चर टे अलगा वीडियो तुलन छोटिया लेक्चर बट टिके हार्ड कारण ज्योमेट्री बहुत इंक्लूडेड अच्छी जदि को पिला किसी न बुझी पारछ दया करी मते कमेंट करि परिबो अगेन मु बाध्य करबी समस्त को जहाँ भी जदि कि लेखिन देन आउ थरे वीडियो को देखो एंड जहाँ भी लिखा है भल की वीडियो रे लेखि सॉरी माने खाता रे भल से नोट डाउन करो बारंबार कहूँ नोट डाउन करिया फल बहुत किसी फायदा मिले दया करी फायदा उठाओ ठीक अच्छे गुड बाय आज में एतिक।